Hello and welcome, folks, to yet another amazing weekday of some great FIFA action right for you. You are watching the eISL Season 2 brought to you by Nodwin Gaming. My name is Fixes. I'm joined along with TTR for all the fun that comes along. So before we get the show started, TT, how are you, bud? आई एम फाइन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज मैचेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर बात किया जाए मुंबई सिटी एफसी की। सो मुंबई सिटी एफसी अभी तक बहुत शानदार परफॉर्म किया है, काइंड ऑफ अगर हम लोग बात करें। एंड ऑन द अदर हैंड हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं एटीके मोहन बगान। सो उनका फॉर्म तो बहुत ज़्यादा लाजवाब गया है पिछले सीजन के मुकाबले। इस सीजन की अगर बात करें तो उनका इम्प्रूवमेंट बहुत बहुत हुआ है। एंड जो चेंजेस भी उनके टीम के अंदर आए हैं, उसका तो प्रॉपरली फायदा मिल रहा है उनको। Yeah, definitely. I mean, we'll definitely take a look at the matchups for tonight. But yes, like you said, both the teams have been going through a better run, especially Mumbai City FC after they started their tour with a draw and having Yeah. just won the game just a couple of days ago, I think, against Kerala Blasters FC. So they have their spirits hot and they're all ready to hit the hammer on the players of ATK Mohun Bagan. But likewise, ATK Mohun Bagan had a really good time against Odisha FC. But yes, enough about it. We'll talk about that a little bit later. Let's take a quick look at how the format is panned out for this season's eISL and let's get to know. So we are, ladies and gentlemen, in our league stages going on from 28th of February towards till the 26th of April 2023 and yes, 11 clubs are participating. Every club has 22 players. We've got 55 matches going along, and then our playoffs that begins from 6th of May, which will span along till the 14th of May 2023, and then whoever wins, of course, is the winner. But also along with that, the champion team, both the players get to play the HGS 2023 play-in tournament. एंड उधर एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने क्लब को एंड उसी के साथ साथ अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने का, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। सो सब लोग कोशिश यही करेंगे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके जा पाए इस पूरे इंटायर टूर्नामेंट के अंदर। एंड देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म टूर्नामेंट है, सो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रॉपरली टाइम लिया जाएगा उनकी तरफ से। And there you have it, the prize pool that we're talking about, 33 lakh rupees, and from which the first position gets 4.5 lakhs, the second gets 2 lakhs, and the third and the fourth get 75,000 respectively. But, that being kept aside, I think it's time to address the line in the room. Let's take a quick look at the schedule, the matches we have lined up for you guys for the night. And it is going to be starting off with Mumbai City FC going up against ATK Mohun Bagan, and then we have got East Bengal FC taking on Hyderabad FC, and in the third matchup we have got Bangalore FC going up against Kerala Blasters FC. So Kerala Blasters FC, two back-to-back not so great performances. They would be looking to bounce back, but when you're looking at a team like Bengaluru FC, TT, where you've got players like Charan Jot and Shatnik, I am already gonna start sweating. ऑब्वियसली लाइक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है बेंगलुरु एफसी। एंड अभी तक इस टीम को चुनौती देने वाली टीम बहुत ही कम देखने के लिए मिला है। बट या आज के दिन पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस जाएगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आशा करते हैं कि केरला ब्लास्टर कम बैक करे। And there you have it. The first matchups have been decided. In our first game, we go up with Saki taking on Vicky. And then we've got Crusher and Afnan for the game number 3. And in between, we've got that co-op matchup. So Saki and Crusher, they've been in a really good form. It was Shubham, I believe, who did manage to take down Saki. So he must be looking to, make a comeback on that individual level. But as a team, I really loved how Saki and Crusher played. I think it was a 3-1 scoreline against Shubham and Lokmanu. And then, of course, Crusher did something really amazing against Lokmanu. And Lokmanu was just feeling gutted over there. I mean, I still have the glimpses of that one, in fact, the decisive goal where the defender made that one bad mistake. Not even a mistake. I think we could just say that Lokmanu was unlucky in that situation, because with me, it has happened multiple times in FIFA 23 where my defender goes for the charge, he takes the ball, and suddenly
the ball just deflects away and then is poached and is scored for a goal. But that aside, it's a fresh new week. We've got all these players, just waiting. They've been practicing a lot. But if it comes down to prediction, since you're a big East Bengal FC fan, I have to bring this up. How do you think ATK Mohun Bagan's odds are in this particular game? आई थिंक इट्स टू टफ क्योंकि इसके पहले हम लोग सिर्फ एटीके मोहन बगान के एक ही मैच देखे थे एंड ऑन द अदर हैंड मुंबई सिटी एफसी का भी फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है सो आई एम गोइंग विद अ ड्रॉ फॉर द फर्स्ट मैच लाइक मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि शायद द फर्स्ट मैच हम लोग को ड्रॉ होता हुआ दिखे एंड ऐसा भी हो सकता है कि एटीके मोहन बगान जीत जाए तो मेरा थोड़ा बहुत टिल्ट रहेगा एटीके मोहन बगान की तरफ बट या लाइक धीरे धीरे हम लोग प्रेडिक्शन पे जाएंगे बट आई थिंक जो सेकंड मैच है उसमें मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा क्योंकि उसमें फैन बाहर निकल जाएगा सो या Okay, वहाँ पे आप अपनी दिल की बात सुनोगे. That is what you've said, and it's all right. We are all fans. Even I'm a EPL Liverpool fan. We are going through a tough phase, and we'll not talk about that anymore. Okay? But yes, the first matchup, like I said, right? When we are talking about players like Saki and Vicky, both of them are quite experienced players, or rather, we can just categorize them as the veterans of the scene, and I've seen them playing in a lot of different tournaments outside of eISL, and both have had a rather good run, if not like an amazing one, like how Charanjot or Saransh or maybe even Genesis is having. But then again, I'm really looking forward to watch Genesis and Warsi also play. I think that's the second matchup that we've got, and that's going to be their second matchup overall. But a lot of teams are going to be playing that third matchup, like I think Kerala Blasters FC, and this is also the same case for Mumbai City FC. So Mumbai City FC, I mean, Crusher and Saki, two new players, completely just playing around this time. They missed out on the eISL first season, and now we've got them stacked up against, when you're talking about Vicky, that's also his first time in the eISL. But the second player, you've got Afnan. Now, Afnan, he's a wonder kid, right? We've had those phases of Afnan. They were in season 1. Just to recap for you guys, Afnan was kind of little scared, little nervy. But then as the league progressed, he was in an insane form. Went off till the playoffs. But enough banter, enough chatter, because right now the first game is on, ladies and gentlemen. Mumbai City FC from left to right in their blue kit, and we've got ATK Mohun Bagan from right to left in their whites. शुरुआत हो चुका है इधर गेम का एंड उसी के साथ देखिए मुझे तो लगता है कि दोनों ही टीम्स के ऊपर प्रेशर थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि जो एक रन रहता है वो जरूरी है बट इस बार अटैक बनता हुआ बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन फिलहाल के लिए बन चुका है मेसी ओह माय गॉड आउटफुटर था नहीं रख पाए गोल पोस्ट के अंदर I think it was a finesse with the way he just tried to curl it in. And even I am kind of taken aback because Messi usually from that position with a finesse shot does not miss. Did it have anything to do with the weak foot? But I still feel Messi has a really strong weak foot. But look at Vicky giving him no time to breathe. Instantly just went in with that step over and tried to score. But the keeper for this time, I think Vicky, in fact, Saki must be happy that he actually made a save. Again, for all the viewers, we all know how erratic the goalkeepers in FIFA 23 can be. But now, back again is Vicky trying to build up an attack. Yeah, and शुरुआत देख के लग तो रहा है कि ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है एंड देखिए इधर हाई लाइन तो खिला रहे हैं फुल्ली प्रेशर क्रिएट कर रही है इधर पूरा अटैक लाइन पहुंच चुके हैं डिफेंस के पास एंड एटीके मोहन बगान कोशिश उनका यही है इधर बॉल रोल करते हुए अंदर की तरफ आ रही थे लेकिन उसे टाइम पे एक इंटरसेप्शन देखने के लिए मिला मुंबई सिटी एफसी बहुत कुछ बार ऐसे सिचुएशन में फंस जा रहे हैं जिधर से अगर थोड़ा भी गलती वो करते हैं तो एक गोल कंसीड कर सकते हैं Yeah, I think Mumbai City FC in that situation in the previous attack for ATK Mohun Bagan, that was a little bit of extra skill moves being shown. Maybe could have gone for an extra pass or maybe could have done something else, but tried to send for a lob through, did not go in. But look at Messi with that blistering pace, passes it on towards Ronaldinho, who is making a rush inside the final third over there. Would want to
do something, but does not have a lot of passing options. Rather goes behind. But for now, I mean, the way the game has begun, I think ATK Mohun Bagan are in real good control of the game, especially after that first little hiccup. And this could be a shot on goal. Wow. And it is indeed ATK Mohun Bagan. They strike. And the assassin will be R9, Ronaldo Nazario. What a play coming in. Built up the chance, waited for the pass. And where was the defense of Mumbai City FC? Wow, what a performance from ATK Mohun Bagan. But इधर बात करना होगा. Obviously इधर डिफेंस किधर था, क्योंकि इनका डिफेंस जो है वो एकदम नीचे चले जा रहे हैं. एंड इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता हुआ दिख रहा है. सो या अभी बिल्ड तो करने की जरूरत है ही. बट मेसी को लेफ्ट साइड पे खिलाना कभी कभार आपके क्रॉसेस के लिए एंड पासेस के लिए बहुत अच्छा होता है. बट जब सिचुएशन आ जाता है शॉट लेने का, उस टाइम पे प्रेशर बन जाता है एंड वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता. बट काजेविना के साथ एंट्री लेने की कोशिश था, बॉक्स के अंदर आ भी चुके थे, लेकिन एक बेहतरीन क्लियरेंस. रोनाल्डो विद द बॉल एंड आई थिंक इस बार के लिए तो खतरा टल चुका है. At least for now. At least for now. But one thing for sure, Vicky, the way he's just spearheading his attack, I mean, Saki really needs to watch out for his defense. Hasn't had the best of runs, is still, kind of waiting for his first win in the eISL. And there you have it with Messi, passes it on towards R9. A little bit of a roulette there. Takes a shot, did not have the best of balance. If a little bit of extra power would have been there in that shot, maybe with R9, that would have surely gone in. A short corner being taken again. And pass it on towards Hakimi with Mbappe just moving behind and wanted to take a shot. But this time, Saki ensured that his defense was alert and vigilant. Yeah, and I think Saki is the one player जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पूरे entire tournament के अंदर जो कि कॉर्तोआ को यूज कर रहे हैं गोलकीपिंग. बाकी सबके सब वैंडेसार को यूज करते हुए दिख रहे हैं. बट वर्जिल वैन डाइक दोनों प्लेयर्स के बीच से शील्ड करते हुए एंड इस बार कंसीड करने से जरूर बचाए, क्योंकि जिस पोजीशन पे बॉल निकल रहा था उधर अगर रिसीव कर लेते, मोस्ट प्रोबेबली जो इनको को खिलाया जा रहा है वो अगर रिसीव कर लेते तो शायद उधर एक फिनिश हो सकता था. बट इस बार काउंटर पे थियो हर्नांडेज क्रॉस, बट इधर भी वही सेम ने वर्जिल वैन डाइक. एंड ये डिफेंडर तो कहेंगे ही एंड मॉन्स्टर है डिफेंडिंग लाइन पे. Yeah, I think we've seen a lot of those, centre-back pairs, right? But one thing is constant, that is Virgil van Dijk. Everybody wants a piece of him, and thankfully they've got those unlocked accounts where they can use everybody. But now Messi wanted to try and build up a play. But we've seen a lot of other options also, right? I'm really surprised nobody is using the Sergio Ramos flashback card. Initially when it came out, people thought it's just an 8-year card. But then when they realized how good its AI is, even there are other cards like Koulibaly, my personal favorite, Tomori, but we'll talk about that a while later, because our Ronaldinho tried to score a goal, but this time Courtois was alert and ensured that saved it. Went out just for a corner, as ATK Mohun Bagan have been really pressing on with their attack. Messi passing it on towards Mbappe, a little bit of focus over there, as the possession again been stolen. Saki really needs to calm down. He really needs to take a break over here. Just calm his senses. It's still not late. It's just 1-0 and we are still in the first half. But the way, I think this could have possibly been an offside had Messi received it. But regardless, the way, ATK Mohun Bagan have been playing and they've been pressing, I think in the second half, TT, it might be right to say that we can expect a few more goals coming out of Vicky. या मे बी, बट जब हाफ टाइम होता है उस टाइम पे आपको लाइक ओपोनेंट को भी बहुत सारा टाइम मिल जाएगा. आई थिंक सैकी उनको सोचने का टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत एंड वो चेंजेस भी करेंगे. बट तो अभी के लिए तो देख सकते हैं बॉल कंट्रोल प्रॉपरली एटीके मोहन बगान के पास बहुत आ सकता था, बट एडे मिलिटाओ थे मौजूद. तो फर्स्ट हाफ का गेम हुआ इधर खत्म एंड स्कोरलाइन अभी के लिए है 1-0. एटीके मोहन बगान बहुत ज्यादा बेहतरीन शुरुआत करते हुए एंड यही शुरुआत चाहिए था. ये होता है एक प्रॉपर कमबैक. पिछले सीजन और इस सीजन के अंदर जमीन आसमान का फर्क बन चुका है. वो होता है ना कि एक कॉइन के दो साइड होते हैं, एक हेड और एक टेल. पिछले सीजन टेल में थे, इस बार हेड पे आ चुके.
और अच्छे तरीके से but Yeah. I still remember Binder Tej and AP Dillon. Binder Tej had an amazing attack. He was like one of those players who was really aggressive, really went in for scoring goals, and then again, like you said, ek sikke ke do pehlu. The downside was his defense was completely open. So that one thing that he needed to fix, which he eventually did as the league progressed on, because there were moments where he would score like 5 goals, but then there would also be moments where he would concede 7. So that was one of the biggest underlying issue, but he's an amazing player nonetheless. This time, however, did not participate in the eISL, but regardless, getting back to the match, talking about Saki, he's calmed his nerves, and he's making sure he's got a patient attack with Cap Dibia, the new Foot Fantasy card, which might get upgraded with R9. Had a chance, but still, the possibilities are there. हाँ, and I think हाफ टाइम के बाद रोल चेंज कर चुके हैं एंड इस बार हाई प्रेसिंग करते हुए मुंबई सिटी एफसी बेलिंगम से एम्बापे लेफ्ट कॉर्नर पे फिनिश करते हुए एंड क्या ही शानदार किए शॉट लिया एंड पावर हम लोगों को दिख रहा है एंड यही होता है टीम ऑफ द ईयर एम्बापे का पावर एंड क्या शानदार तरीके से फिनिश था एंड इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछले हाफ पे कि शायद जो टाइम मिलेगा उस टाइम का प्रॉपर फायदा उठाया जाएगा साके की तरफ से एंड वो उठाया गया है. Yeah, this is where I really feel the experience sets in, right? This is where both the players sort of know what they need to do and what things can they do to improve. But likewise, beautiful heel to heel, and then the defender was present. This time, the central defense looks a lot more solid, and I think Saki has gone for Eder Militao. I mean, another team of the year card, but we haven't seen a lot of Eder Militao. We've seen a lot of Maldinis being played as a centre back, one of the best SBCs to have ever come out. And if you're wondering what an SBC is, it's a squad building challenge where you have to give up a few fodder cards to make it up and build that player's card up right from zero. Quite expensive, but I think if you ask me, 100% worth it. For sure, and Martini, maybe Baby Martini also a very good option if you don't have that much coin in your account. तो yeah, I think मैंने तो यूज़ किया था एक दो बार एंड उसके बाद मतलब यूज़ तो मैं करता हूँ लेकिन मैं जीत नहीं पाता वो अलग बात है बट ओवरऑल अगर देखा जाए अभी तक गेम सो दोनों ही टीम्स दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से इधर अपना गेम दिखाते हुए अपने अपने क्लब्स को कहीं ना कहीं एकदम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. बाय द वे मुंबई सिटी एफसी का ये तीसरा मैचअप है जिधर ऑन द अदर हैंड हम लोग को एटीके मोहन बगान का देखने के लिए मिल रहा है दूसरा. सो एटीके मोहन बगान अगर इस पे ड्रॉ या फिर विन लेके जा पाते हैं तो मुझे लगता है कि एटीके मोहन बगान थोड़ा सा आगे रहेंगे मुंबई सिटी एफसी के मुकाबले क्योंकि वो एक मैच कम खेले होंगे बट पॉइंट्स काइंड ऑफ सिमिलर पोजीशन के आसपास ही रहेगा. और अगर हरा देते हैं मुंबई सिटी एफसी को फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली एटीके मोहन बगान जो है वो शायद पूरे स्कोरबोर्ड के ऊपर इस मैच के बाद तो लीड कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद आज के ही दिन पे आखिरी गेम जो आखिरी मैचअप है वो बेंगलुरु का होने वाला है. सो या बहुत कुछ इधर पॉसिबिलिटीज है बट एज ऑफ नाउ एक बार फिर से बिल्ड हो रहा था एटीके मोहन बगान की तरफ से लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं हुआ. एक छोटा सा मिस पास एंड आपका पूरा अटैक जो है वो टूट जाता है. Yeah, I think if we talk about the scoreboard, FC Goa is the only club that has managed to win 2 of their games, right? They're as the leaderboards, but on top of the leaderboards. And when we compare it with ATK Mohun Bagan, like you said, if ATK Mohun Bagan wins today, they're going to be tied up along with FC Goa. And then we also have Bengaluru FC's match and Kerala Blaster FC's third game, where they're really desperate for a win. But that's going to be really difficult for them as Saki tries to build up a play for his team. In fact, it is Vicky who wanted to go in, and eventually the ball just goes out for a corner. And now it's going to be a short corner. We haven't seen a lot of those long corners being taken. And maybe after players include their super sub, maybe if Ibrahimovic comes in, or if they have Pogba, which is very less likely. These are the few players who've got that power header trait and can go for those big jumps and have that height also to help them along with that. Maybe that could have been a possibility, but players liking to keep things
calm and steady. This time again, Vicky trying to build up an attack, but Saki's defense after that first fall has improved a lot. Yeah, and Saki I think fully transform हो चुके हैं पहले हाफ के बाद, बट इस बार पॉज लिया जा रहा है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, एंड वो जब तक बॉल बाहर नहीं जाता तब तक ऑब्वियसली जो है वो हम लोग को पॉज नहीं दिखेगा, बट उसके पहले क्या एक मौका बन सकता है रोनाल्डो या एडर मिलिटाओ उसी टाइम पे बेहतरीन तरीके से इधर डिफेंस करते हुए। देखिए मेसी डोमिनेट से रोनाल्डो अगेन, एंड मुंबई सिटी एफसी उनकी तरफ से कोशिश यही चल रहा है कि वो जितना ज़्यादा हो सके वो प्रेशर क्रिएट करे, क्योंकि एटीके मोहन बगान को जब शुरुआती में लीड मिला था उसके बाद वो भी पूरे हाफ को राज किए थे, बट इस बार एक गलत पास एंड इंटरसेप्शन के थ्रू फिर से एक बार बहुत ही ज़्यादा एंड टू एंड हम लोग को गेंद देखने के लिए मिल रहा है। मिडफील्ड के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं बिताया जा रहा, डायरेक्ट इस गोल या फिर उस गोल, एंड ऐसे डायरेक्ट फुटबॉल देखने में बहुत मज़ा आता है। Yeah, I mean, it's either this way or the highway, right? I think Yeah. if this keeps on going and nobody finds a winner, then we might have to end up tied. But with Ronaldinho wanted to enter in this time, Saki again alert as ever he can possibly be. And like you said, complete end-to-end FIFA is something that we are witnessing. Not a lot of those, midfield box-to-box passes or anything. Players are liking, to attack from the wings, pass it on towards maybe their fullback. You can see already Theo Hernandez has made a run. I think he's on overlap there. But right now, the ball possession again been given away. And this we've got, I think, at max 2 more attacks remaining, one of which we get to see right now. And Vicky understands the gravity of the situation. He knows that he has to convert this particular chance. Did not have a lot of passing options there. And when you put a fortress like Virgil van Dijk standing in front of you, what do? Let's see what he can do. But देखिए ये आखिरी चांस होने वाला है आई थिंक मेरे हिसाब से, बट नो आखिरी मोमेंट पे बॉल को बाहर भेजा गया ग्राउंड के, एंड सब्स्टिट्यूशन मे बी फॉर 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए एंड जब थ्रो आएगा भी उस टाइम पे भी बॉल रहेगा मोस्ट प्रोबेबली एटीके मोहन बगान के पास, एंड एटीके मोहन बगान के पास अगर बॉल रहेगा दैट मींस जो आखिरी अटैक है वो हम लोग को एटीके मोहन बगान की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। सो आई डोंट नो व्हाई मुंबई सिटी एफसी इधर बाहर बॉल को भेजे, क्योंकि कोई लाइक उनके पास नहीं था ऑप्शन और समथिंग लाइक दैट, बट या लास्ट चांस पहले इन ऑन द अदर हैंड इधर बॉल छीना गया है उसी टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा लड़ाई चलता हुआ मिड ग्राउंड बॉल छीनने के लिए, आई थिंक गेम एंड्स। Yeah, and it does with a draw from both the sides, as we can see, just scoring 1 goal each. And ATK Mohun Bagan might feel not really happy about this. And especially Saki also from Mumbai City FC still yearning for his first individual victory in the eISL. And another draw comes into his bag. And I think if we have to kind of sum this match up in a nutshell, it was Vicky being really good in that first half, creating multiple chances and did score 1. But after that, I think Saki really woke up to his senses, realized that his defense is all over the place, and then he took all the necessary measures required. And look at this, that little run from Virgil van Dijk, maybe trying to screen that player over there, maybe mark him or maybe tackle him, just gave that opening towards R9, who had no trouble in scoring. And then there were a few more chances created by Vicky, but none of them getting converted. Of course, Vicky did have more shots on goal, on target in comparison to Saki, but numbers don't mean anything unless and until they're converted into goals. And then we saw, also Saki making that comeback, scoring that goal beautifully with Mbappe, just that turn and a shot. And we know from that position he does not miss. So that brings us to game number 2, TT, and it's going to be Crusher and Afnan joining along with Saki and Vicky respectively for a co-op game. And any thoughts, any pre-match thoughts about this particular game happening? आई थिंक प्री मैच पे तो ये रहेगा, पिछले दिन की अगर बात किया जाए लाइक मेनली एटीके मोहन बगान की तरफ से, सो उनका काफ़ी ठीक ठाक रहा था परफॉर्मेंस। अगर हम लोग बात करते हैं
कोऑप के ऊपर, एंड सेम विथ मुंबई सिटी एफसी एज वेल. सो मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टक्कर का मैच जाएगा, जैसे कि हम लोगों को पिछला गेम देखने के लिए मिला. 1-1 हम लोगों को देखने के लिए मिला स्कोर लाइन. एंड मैं तो जैसे कि प्रेडिक्ट भी किया था कि ये शायद एक ड्रॉ के साथ खत्म होगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज एंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्म दोनों ही अभी सेम पोजीशन पे चल रहे हैं. एंड दोनों पे ही उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, एकदम फुल ऑन नॉर्मल. क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो उस टाइम पे आपका परफॉर्मेंस कभी कभार गिर जाता है प्रेशर के चलते, तो वो चीज़ भी इधर नहीं होगा. सो एकदम कंफर्टेबली वो मैच खेलेंगे. एंड आई थिंक इसी वजह से, एंड वन मोर थिंग जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिला पिछले गेम पे, जब हाफ टाइम खत्म हुआ उसके बाद पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया. तो इसका कभी कभार कारण ये भी होता है, जब साइड चेंज हो जाता है, आपका एक फेवरेट साइड होता है, या तो आप राइट टू लेफ्ट ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, फिर आप लेफ्ट टू राइट खेलना ज्यादा पसंद करते हो, या फिर आपका ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाता है, ना कंट्रोल आपके पास आ जाता है. जैसे कि मेरा लेफ्ट टू राइट थोड़ा स्ट्रांग है, राइट टू लेफ्ट के हिसाब ऊपर अगर मैं बात करूं, तो या वो चीज हो सकता है कि इनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता हो. बट ये प्रोफेशनल प्लेयर है, इनको पता है कि दोनों साइड से ही किस तरीके से खेला जाता है. बट फिर भी मुझे लगता है कि साइड चेंज के ऊपर भी बहुत कुछ शायद वेरी करता है. Yeah, I think that might be one of the factors. Maybe if we could have somebody, coming for an interview, we might take the opportunity to ask them. But I really felt that in the second half, like you said, it was pretty much end to end, right? Not a lot of balls being passed over in that mid area. Not a lot of. It was pretty much utilizing their flanks a lot. Going through the wings, trying to do those shots. And one other thing that I felt that the substitutions came pretty late, right? This could have been done maybe at that 70th minute mark, and just click on pause, and by 75 or 76 minutes you get your Peles back on, and get all the necessary players to score that winner. Maybe could have taken that gamble with trying to go a little ultra attacking and a few other passing options, because both the players were trying to create those chances. They were getting into that final third, but then you face a wall like Van Dijk, and you pretty much know what to do. You just can't get through him unless until you perform a crazy skill move that your opponent did not anticipate, or maybe a last moment roulette just to go over him, and things could have been done. But it's very difficult. It's easier said than done in the game, to be honest, because you think of a lot of things trying to be you would execute and you would try, but suddenly you do not know what the other person is going to react and how he's going to react, and as a result of which it's kind of comes down to like a 50-50. If it works, or if it does not, you have to get back again, take the ball away, and start over. And talking about starting things over, we do have our second match about to kick off, and there you have it, Mumbai City FC from left to right in their blues, and ATK Mohun Bagan from right to left in their white jerseys. Now, this is where, like we said, Saki and Crusher, they're going to be playing as a team against Vicky and Afnan. And right off the bat, we see Mumbai City FC, they're trying to build up an attack. शुरुआती में प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया था बायरे में, बट लकी थे इधर कि गोल के अंदर नहीं गया, क्योंकि देखिए सिचुएशन कभी कभार ऐसा भी बन जाता है कि आप हल्के से शॉट से भी वो गोल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं FIFA 23 के अंदर गोलकीपर्स के ऊपर ज़्यादा आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर कभी कभार बहुत अच्छा गोलकीपिंग होता है और कभी कभार ऐसे गोल वो खा जाते हैं, देख के लगता है कि शायद हम भी अगर गोलकीपर होते तो बचा लेते. तो ये जो सिचुएशंस है वो कभी कभार बनता है. बट एज ऑफ नाउ शुरुआती अगर हम लोग बात करते हैं 7-8 मिनट में, तो ऑलरेडी ये सेकंड अटैक बन रहा है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से. बट इस बार जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था एंड क्लिनिकल रहा पूरा. रोनाल्डो के साथ फर्स्ट गोल आता हुआ मुंबई सिटी एफसी की तरफ से. एंड मुंबई सिटी एफसी शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस मैच पे. Oh, definitely they are. I mean, I love the passing game going on between Saki and Crusher. They know exactly where they have to be. They know what to do, and they know their opponents pretty well as to how they're going to react. And suddenly, look at Afnan's face, right? The pressure seems to be back on, and this has been one of the major concerns for ATK Mohun Bagan. Haven't really been doing well in terms of their co-op games, and now looking to change things around. And Virgil van Dijk, guess what? Makes the save yet again.
saves the day over there as he did try to, I think it was R9 who tried to get through him, trying to use maybe, I think it was a step over, but yeah, Virgil van Dijk the save over there, and this was a good, good Hmm. attempt on giving a good long through pass, but well, I think for the first time, Theo Hernandez wasn't quick enough to receive it, as a result of which the ball has been stolen. Now this is another big opening with Jairzinho making that run. Mbappe right at the position where he needs that cutback, passes it on extra one towards R9, but the shot taken a little too late as the threat, I feel, has been averted. या फॉर नाउ बट आई थिंक मुझे लगता है एटीके मोहन बगान को थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है गेम को, क्योंकि जिस तरीके से जिस पेस पे गेम चल रहा है वो प्रॉपरली देख के लग रहा है कि मुंबई सिटी एफसी के कंट्रोल में है। बट अभी बहुत देर के बाद फाइनली एक क्लिनिकल चांस हो सकता था, बट एक गलत पास, क्योंकि उधर रोनाल्डिनियो भी नहीं थे, थ्रू खिलाने की कोशिश था, और आप लीड के सामने से ऐसे तो पास नहीं खिला सकते। बट मुंबई सिटी एफसी जब भी उनको मौका मिल रहा है वो 2 मिनट के लिए भी नहीं सोच रहे, डायरेक्टली वो पासिंग ऑप्शन ढूंढते हैं, आगे निकलते हैं और मौका बनाते हैं। एक बार फिर से निकल मौका, सर तो सेव उन्होंने किया, वो शायद ये पूरे मैच को हाथ से निकलने से बचा लिया, क्योंकि अगर 2 गोल का फासला बन जाता है फिर कमबैक करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कोई भी टीम के लिए। Yeah, especially when it's a co-op game, and especially when it is also ATK Mohun Bagan who are looking for their first co-op win, and Virgil van Dijk again stepping up, and I think it was a reverse elastico that Mbappe used in that moment just to get past through, and very difficult. I think it's a 5-star skill move, and only the 5-star skillers can use that. As Mbappe another step over, trying to get it, looking for that cutback. Does want to give it towards Arnold. Oh, that was so close. And I do not know who it was on the receiving end, but must be feeling gutted by missing such a golden opportunity like that. Thankfully, the goalkeeper got in time. A jump scare given to all the ATK Mohun Bagan fans just right now. एटीके मोहन बगान फॉर्मेशन लुक्स मेसी, क्योंकि देखिए इधर पूरे डिफेंस लाइन मिडफील्ड सब जा चुके हैं अटैक पे, डिफेंस पे सिर्फ 2 ही प्लेयर, वर्जिल वैन डाइक, बट एक भी काउंटर अगर सही से निकल गया फिर कोई नहीं रहेगा। बट इस बार देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया गया, बट आई डोंट नो व्हाई इधर एटीके मोहन बगान का जो फॉर्मेशन है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो टूटता हुआ नजर आया हम लोगों को टाइम दर टाइम, इसी वजह से इतना ज़्यादा अटैक बनता हुआ दिख रहा है। बट इस बार हकीमी बेहतरीन एक इंटरसेप्शन जिसके बदौलत खतरा तो टल चुका है, बट खतरा बनाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 1-0 से पीछे है। एंड हम जानते हैं आज के इस मैच, इस पर्टिकुलर गेम के ऊपर तो फ्रॉम द साइड ऑफ एटीके मोहन बगान उनके वर्जिल वैन डाइक जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर से इतना ज़्यादा काम करा रहे हैं उनको उनका टीम, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा देख के खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्लेयर्स अपने प्रॉपर फॉर्म में ना हो एंड उसी के साथ साथ स्टैमिना अगर डाउन हो जाए फिर उसके बाद पेस भी कम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र डालने की कोशिश करना होगा। 40 मिनट्स का गेम हो चुका है एंड थोड़ा सा स्लो डाउन करना होगा एटीके मोहन बगान को, जो कि वो अभी नहीं कर रहे हैं, तो उनको करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ऑन द लाइन और 2 गोल्स तो शायद आ सकते हैं मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। If this keeps on going, for sure, because Mumbai City FC, we've seen after that 1 week break, they really have improved on their co-op game. I think went on to beat Kerala Blasters FC with a 3-1 scoreline. So they're really confident about their co-op play. I think it is the onus kind of lies on Vicky and Afnan to try and make something happen out of this, as again Mumbai City FC with a beautiful pass created, but in those moments the defense of ATKMB being alert and stable as ever, managing to deal with the threat. So if you take a look at possession, it's slightly inclined towards ATKMB, but when you again look at the chances being created, ATKMB, they have been haven't really been successful in taking a shot
on goal. In fact, they have been always kept at bay. Whereas Mumbai City FC, there were, I think, two good chances out of which one was converted. And otherwise, this match is looking really close, really tight. Anything can possibly happen in the second half. या कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक जिस तरीके से गेम अभी चल रहा है मुंबई सिटी एफसी तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे. एंड स्पेशली इधर बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की नहीं है, इधर बात है इधर सिनर्जी की. वो सिनर्जी दिख रहा है मुंबई सिटी एफसी के टीम के अंदर. एंड वो दोनों प्लेयर मिलके जिस तरीके से खेल रहे हैं अपने क्लब के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन. बट ऑन द अदर हैंड मुंबई सिटी एफसी के लाइक एटीके मोहन बगान की तरफ से उतना प्रॉपर पास नहीं दिख रहा था अभी तक. बट इस बार बेहतरीन एक लॉब पास किया गया था थियो हर्नांडेज के पास, जिसकी वजह से मौका बन तो रहा था. बट जार्जिनियो आज उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दिखा है. डायरेक्टली पास टुवर्ड्स एम्बापे एंड एम्बापे रन निकाल चुके हैं. स्प्रिंट में हराना एम्बापे को बहुत टफ है, बट जो पास है वो ब्लॉक करने में कामयाब रहे इधर माल्डिनी. Oh, I mean, this is getting really concerning for all the ATK Mohun Bagan fans, because they have to bounce back in this and cannot let Mumbai City FC just walk over, because the next match that we've got for us, it's going to be Crusher, who's in a really scintillating form. And this is something that Afnan, I guess, knows at the back of his mind. And now this is a good chance. Possibly could have been converted had Eder Militao not made that huge jump and got his legs over the ball. But now we're looking at a possible counter-attack. Capdevia got into play over here as he gives it out towards Ronaldinho. And Ronaldinho finds that perfect room with Mbappe and scores! Oh my goodness, Mumbai City FC might just have done it. The second goal coming in, and what a beautiful shot it was. Did not really panic at all. The moment he got the ball, kept his composure, just filled off the tap in, just goes whizzing past. Slowly you could see that goal going in, and the goalkeeper, Van der Sar, pretty much helpless. Yeah, maybe this is the last nail on the coffin. But आई थिंक मुझे लगता है कि अभी तक एटीके मोहन बगान जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनका खुद का खतरा वो खुद बना रहे हैं. क्योंकि ऐसे ऐसे पोजीशन पे वो बॉल लूज कर रहे हैं जिधर से उनका डिफेंस तो पहली बात एक प्रॉपर शेप में नहीं रह रहा, जिसकी वजह से एकदम सीधा सीधा मौका मिल रहा है. एंड ऑब्वियसली इधर बात करना होगा मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर्स के विजन की. वो जिस तरीके से अपने विजनरी पासिंग के थ्रू भेद रहे हैं इधर डिफेंस को एटीके मोहन बगान के, वो बहुत शानदार. बट या थोड़े बहुत चेंजेस आई थिंक किया गया है टैक्टिकली, एंड पेले को लिया गया है टैक्टिकल से. ऑन द अदर हैंड हम लोगों को टेरिस भी आता हुआ दिखेगा. सो अभी राइट विंग पे खेलते हुए दिखेंगे पेले, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द साइड ऑफ मुंबई सिटी एफसी. एंड एटीके मोहन बगान की तरफ से भी हम लोग को एक चेंज देखने के लिए मिला. बट एटीके मोहन बगान उनको थोड़ा स्लो डाउन करके सोच समझ के पासिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके पासिंग में ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. I mean, at this point, okay, again defended pretty well, and Alphonso Davis being brought up, pretty interesting choice, because I like this, the thought from Mumbai City FC, not just going for the regular meta players, but Alphonso Davis, we know how good a card that is. And this time, however, ATK Mohun Bagan managed to steal the possession away, again stolen in, a beautiful heel to heel being displayed over there, and with Bellingham passes it on towards Ronaldinho. Again another one, an outside footed shot to finally bury the players of ATK Mohun Bagan 6 feet under. And like you said, TT, the final nail in the coffin. I think this is it. What a shot, what a goal, what a display by the players of Mumbai City FC. What shot, and with this goal ऑल सेटल्ड मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 3-0 ऑलरेडी हो चुके हैं. इधर से कम बैक करना बहुत टफ है. बट देखिए डिफेंस के बारे में, जिसके बारे में मैं तब से बातें करे जा रहा हूँ, इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन पा रहा. एंड जब दो प्लेयर्स, ऑब्वियसली कोऑप पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब आप दोनों के दोनों प्लेयर सिर्फ डिफेंडर को ही कंट्रोल करोगे, उस टाइम पे आपके अंदर जो सिनर्जी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है. बट एज ऑफ नाउ एडर मिलिटाओ वो कंट्रोल कर रहे थे, एंड वी ऑल नो कि एडर मिलिटाओ भी कैपेबिलिटीज रखते हैं इधर, क्योंकि उनके पास पेस है, उनका शूट भी
भी काफी अच्छा है। इसके पहले बहुत सारे गोल्स एडम मिलिटाओ की तरफ से भी हम लोगों को देखने के लिए मिला है, बट अल्फांसो डेविस उनको बीट करना बहुत टफ रहेगा। वी नो ओके, बीच में पास क्रॉस किया था जरूर, लेकिन फिर से एक बार बेलिंगम अपना इंपॉर्टेंस इधर दिखाते हुए, क्यों बेलिंगम को इधर चूज किया जाता है एंड क्यों इधर केडीबी को शुरुआत नहीं कराया जाओ। एक और मौका बन गया था इधर। Oh my goodness. Oh my goodness. I mean, when everybody was anticipating that he might go for a, a cutback over there, did not. Instead, taking shots, being fearless. And Ronaldinho has been a cheat code, especially for Mumbai City FC, scoring, creating multiple assists over there. And what a card he is. And the best part, the player controlling him. I do not know who exactly it is. Could be Crusher, could be Saki. But he is playing him to perfection. But finally, looks like could be a consolation goal coming in, but denied yet again. And yes, like you just spoke about Bellingham instead of KDB. I 100% agree with you, because Bellingham, though he's kind of an overall package. Might go for another shot, will not shy away, but this time with Ronaldinho misses from that left foot shot. I think the weak foot otherwise would have 100% gone in. बट या ऑन लाइक कैम आप देख सकते हैं इधर मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर्स कितने खुश हैं, क्योंकि उनको पता है वो जस्ट ब्रेड एंड बटर की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड उनको कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं हो रहे। डिफेंस पे प्लेयर नहीं है, जो चेंजेस था, इंस्ट्रक्शंस थे, वो चेंज करने की जरूरत था, जो कि शायद अभी तक नहीं किया गया है। पहले अकेले दो प्लेयर्स को इधर झेलते जा रहे थे। क्रॉस भी लास्ट पे दागा गया, बट कोई था नहीं उधर रिसीव करने के लिए। सो ये अटैक तो कन्वर्ट नहीं हो पाया, बट 3-0 के साथ जिस तरीके से मुंबई सिटी एफसी इस पर्टिकुलर गेम के अंदर परफॉर्म किया, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बट अभी तक कोई भी एक अटैक प्रॉपरली बनता हुआ नहीं दिखाए। एंड पिछली बार जो एक एक्स्ट्रा पास की से गोल नहीं, क्योंकि एम्बापे के साथ डायरेक्ट अगर शूट करते हैं तो शायद गोल बन सकता था, एंड पास की जरूरत था जो हो नहीं पाया। तो सब मिला के अगर बात किया जाए एटीके मोहन बगान, उनके कोऑप के ऊपर तो थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है। Oh yeah, I think a lot of work needs to be done for their co-op games, right? Because especially in the defensive department, where they've been constantly pierced through, and this looks like another chance in the making, but thankfully dealt with, and could have been a miserable loss for ATK Mohun Bagan had that one more gone in, but still the chances look alive, and now they're just toying around. Classic Ronaldinho plays, where you see him like juggling balls and then just trying to make those passes and everything. But ATK Mohun Bagan, they might be hurting at this point, completely just gutted with this kind of a loss. And yes, beautiful, much needed victory again for Mumbai City FC, and it comes through in their co-op game. And now as things stand up in this entire matchup, so the first game was drawn, the second game, however, Mumbai City FC with an emphatic victory. Now the third game, everything lies on Afnan's shoulder, at least if ATK Mohun Bagan can look forward to drawing this series and just taking single points each. But the task is going to be really difficult, because his opponent is going to be the almighty Sir. इस गेम को अगर हम लोग बात करें, समझ करने की कोशिश करें, तो इसमें आई थिंक कि ज्यादा रोल था ही नहीं एटीके मोहन बगान का। एक तरफा डोमिनेशन हम लोग को शुरुआत से एंडिंग तक देखने के लिए मिला। बहुत जल्दी 2 गोल स्कोर कर चुके थे मुंबई सिटी एफसी, जिसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन हो गया था। बट एक चीज जो कि सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है एटीके मोहन बगान की टीम पे, वो है उनका डिफेंस एंड उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बार बार टूट रहा था। एंड वो देख के ही पता चल रहा था कि सब जो प्लेयर्स है वो एक पोजीशन पे नहीं है। देखिए इधर सब लोग भाग रहे हैं और कोई भी सही पोजीशन पे नहीं है। उनके जो लेफ्ट बैक है वो भी प्रॉपर बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे। सो उनको शायद बीच में थोड़ा बहुत पॉज लेके चेंज करना चाहिए था, एंड उनके फुल बैक्स को एट द बैक रखना चाहिए था अटैक के टाइम पे, इंस्टेड ऑफ लाइक ओवरलैप ऑन समथिंग। तो वो चीज़ें जो है वो चेंजेस नहीं किया गया था। सो आई थिंक ऑन द गो मैच के बीच में आपके जो स्ट्रैटेजी चेंजेस है वो करने की ज़रूरत था, जो कि नहीं हुआ। एंड ऑब्वियसली मुंबई सिटी एफसी की तरह से उनका विजनरी गेम प्ले
इधर प्रॉपरली आउटकम लेके आता हुआ दिखा। सो 3-0 एंड इस पे तो पूरे गेम को देखे कभी कभार ऐसा भी लगता है कि कभी कभार होता है कि हाँ दोनों टीम सच्चे खेले हैं, बट जब अपॉर्चुनिटी मिला है मुंबई सिटी एफसी बा कोई भी वो गोल स्कोर किया, बट इधर वैसा भी नहीं था। ओवरऑल गेम बहुत ही ज़्यादा एवरेज था एटीके मोहन बगान की तरफ से। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा उनके कोऑप गेम के ऊपर नेक्स्ट वीक जो है या फिर किसी वीक पे काम करने की ज़रूरत है। Yeah, I think a lot of work needs to be put down for the boys of ATKMB, because that was not going to be acceptable for the fans, and we know they did achieve a victory in the previous matchup, but that was against Odisha FC, where I think it was a little bit of a different storyline altogether. Let's not forget Bhagia's red card, but in this particular matchup, I really did not have any moment where I could say that yes, ATK Mohun Bagan could maybe stage a comeback, could maybe possibly get a goal. There were a few chances created, however, very close ones, but nothing got converted. And the defense of Mumbai City FC was so solid, and every single time the chances being created by MCFC players, what they were doing is pretty much utilizing both their wings efficiently. And every single time they did that, we saw multiple instances where it was either Ronaldinho or maybe Mbappe just getting through those wings, making that cutback pass, or there were even adaptations made where they did not even bother to go in for those passes, rather just did a ball roll, found a better angle, and scored when we thought that they might go for a cutback. So all these little small mind games that Mumbai City FC played, because let's be honest, City, these are the cards that every FIFA enthusiast sort of dreams of, right? And we haven't seen enough of Trivela shots. We haven't seen a lot of other things being used this time around. And for a team that I have, if I get such players, I'd take shots from possibly anywhere just when I went inside the box, right? Yeah. And there would be like 70-80% of chances that it would go in. It's all about just finding that right angle, a little bit of an opening. But that being said, I think we are on to our final matchup of this particular game. It is going to be a Crusher against Afnan. Crusher from left to right in the blue, and Afnan in that white from right to left. And yeah, right off the bat, we did see, Mumbai City FC, they've sort of made it a signature, always to attack. But look at this, could have been promising. Last moment, you could see TT, there was a little bit of a ball roll attempt by Mbappe. He almost did. But Van der Sar, being such a tall goalkeeper, such a beautiful reach, made the ball, come into his hands and did not give it away. Yeah, बट एक चीज़ जो कि अभी भी मैं कहना चाहूँगा क्रशर के लिए, इनका फॉर्म एंड इनका कॉन्फिडेंस, ये दोनों ही चीज़ हर टाइम शायद अप टू द मार्क रहता है। देखिए, ओह माय गॉड, एक और मौका, एंड अभी भी खतरा टला नहीं है। बापी को इतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन करना पड़ा था इधर डिफेंस के लिए, बट थियो हर्नांडेज मोस्ट प्रोबेबली, देखिए इस गेम पे तो मुझे लगता है कि एटीके मोहन बगान की तरफ से बहुत बेहतर जो आउटकम है वो आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शुरुआती 10 ही मिनट हुआ है, सो हम लोग ज़्यादा कुछ अभी के लिए तो जज नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम और भी आगे बढ़ता रहेगा तब हम लोग को पता चलेगा। बट आई थिंक मुझे लगता है कि एटीके मोहन बगान इस बार जो है वो कमबैक कर सकते हैं। बट जिस तरीके से अटैक बना रही थे अभी तक का क्रशर, उसको देखते हुए मुश्किल है। बट ये कभी कभार हो जाता है, ऐसे चीज़ें कभी कभार हो जाता है कि आप पास तो देते हो लेकिन वो बहुत स्लो जाता है। तो ये प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो पास के टाइम पे। बट मौका बनता हुआ एटीके मोहन बगान के लिए, बट वर्जिल वैन डाइक अपने पैर के साथ रेडी एट द डिफेंस कर चुके हैं। Oh, look at Mbappe trying to go for that run. This could have been a beautiful pass, but dealt with by Lucio. Another defensive pairing we've seen has been in the meta ever since the card was out, right? And such a strong card, Lucio, and especially that World Cup hero card was also really amazing, and that is when we saw even more of Lucio being used. The base icon card is also pretty OP for all the enthusiasts who do not have the best of budgets. But we have seen some other cards also coming up. I am kind of surprised nobody is using Tomori, such a beast of a card. But Pele is going to be the one who scores, and in fact Afnan just sneakily finds an opening and he scores.
when we were just thinking that yes, he might be creating a chance. A beautiful pass, a turn and a shot, and what goal! ATK Mohun Bagan fans, they needed this one desperately, and seems like they might have found a ray of hope in Afnan. या एंड जिस तरीके से गेम चल रहा था उससे देख के लग रहा था कि यस अफनान कोशिश कर रहे थे, अफनान जल्दबाजी नहीं, वो प्रॉपर एंगल ढूंढ रहे थे जिसके बदौलत उनको ये गोल मिला। बट ज्यादा टाइम क्रशर नहीं लेने वाले, रोनाल्डिनियो के साथ एंट्री लेने की कोशिश, बट लूशियो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट इंटरसेप्शन करके दिखाया, जिसके थ्रू बॉल अभी जा चुका है एटीके मोहन बगान के पास। एटीके मोहन बगान, उन्होंने गोल जिस तरीके से किया है, अभी जरूरत है ये डिफरेंस को बना के रखने की और कंसीड ना करने की, क्योंकि अगर कोई भी छोटा सा भी गलती करते हैं, वी नो कि क्रशर किस लेवल के प्लेयर है, वो गोल्स कर सकते हैं, वो इधर इक्वलाइज कर सकते हैं। तो फॉर श्योर फर्स्ट ऑप्शन लाइक सबसे पहले तो कोशिश करना होगा एटीके मोहन बगान को वो सेकंड गोल दाग दे। चले गए हैं इस बार एडर मिलिटाओ, आखिरी टाइम पे बचा लिए, नहीं तो एक और गोल आ सकता था। Oh, 100%. I mean, I'm really liking this confidence, and like I said, right, this is an evolved version of Afnan, the one who's more composed, who's more, in balance, in control of the game, knows what he's doing, when to create those chances, and he did when the moment arrived for him. But now again, he's making that run with Mbappe. Beautiful pass towards R9, and right now, let's see. What can they do? They've been utilizing, both the clubs have been utilizing their wings very efficiently, and an interesting pause being taken right at 30 minutes. So I think could be maybe Mumbai City FC, making a few tweaks here and there, trying to understand what the opposition is trying to do. But so far, I think like we've discussed, ATK Mohun Bagan, they have got the possession stats to their name, and they've been taking a lot of shots. They've been building up good possible chances. And Crusher, for the first time, I feel he's in a back foot. या जिस तरीके से अफनान खेल रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि क्रशर को अभी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है उनके स्ट्रेटजी के ऊपर, एंड उसके बाद शायद हम लोग को थोड़ा बहुत बैक देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अफनान वो गलतियां नहीं कर रहे हैं एंड वो मौके नहीं दे रहे कि क्रशर उस पर कैपिटलाइज करे। सो क्रशर को खुद से बिल्ड करना होगा एंड कुछ अलग करना होगा ताकि वो अफनान को पता ना चले, जो कि थोड़ा बहुत टफ लग रहा है शुरुआती 35 मिनट के गेम देखने के बाद। बट सार्सिनियो एम्बापे के लिए बॉल था, तो देखिए इधर ये चीज कभी कभार हो जाता है कि आपके प्लेयर बॉल छीन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइक थोड़ा सा हेवी टच होने के चलते बॉल चला जाता है ओपोनेंट के पास। तो वो चीज एक बार फिर से होता हुआ दिखा था, लेकिन उसके टाइम पे बॉल छीना गया एक बार एटीके मोहन बगान की तरफ से। बट एक प्रॉपर ट्रायंगल शेप बनाते हुए जब भी कोई प्लेयर को वो आगे भेज रहे हैं, उनके आसपास कहने की एक ना एक पासिंग ऑप्शन उन लोगों को देखने के लिए मिल रहा है एटीके मोहन बगान की तरफ से। एंड एक बार देखिए दोनों प्लेयर्स के साथ डिफेंड करते हुए देखेंगे, ओवरलोड करने की कोशिश था उस प्लेयर के ऊपर ताकि प्रेशर क्रिएट हो। बट रोनाल्डिनियो अपने स्किल्स के साथ इधर रोनाल्डो आखिरी मोमेंट पे ये टच क्रूशियल था। कभी कभार गोलकीपर मिस कर जाते हैं ऐसे गोल्स, बट इस बार बचा लिया गया था। Yeah, absolutely. And lacked not the best of angle to have taken that shot. He still took his chances because, like we've discussed, these cards are so overpowered that more often than not, such goals could also be scored. And for now, it is ATK Mohun Bagan again. Afnan, those L2 long passes we can see from the outside foot has been done. And there was one chance, I think, which came from Crusher where he went for a heel to heel. But that was a normal heel to heel, not an L2 heel to heel. And that suddenly gave him that extra, burst of pace over there as a result where it kind of got defended. Now with a 5-star skiller, when you do that L2 heel to heel, it takes a little bit of an extra animation where he just swirls his feet over there, and that is maybe one of those reasons why players do not prefer using that L2 heel to heel. But regardless, had that been used or maybe an L2 fake shot, that could have pretty much worked out for Mumbai City FC. But regardless, I think after that halftime, as things stand, it's still that one goal lead. And well, we've seen this happen time and again where players have come back
from that 1 goal lead and have gone on to score 2 or maybe possibly 3 goals. A little bit of an introspection, kind of again a recreation of that first individual matchup where we had Saki making that comeback later on. So let's see, this could be interesting as well. लेट्स सी क्या होता है इस गेम के ऊपर. बाय द वे अभी भी 45 मिनट्स बाकी है, जिधर मुंबई सिटी एफसी के पास चांस है अभी भी जीतने का. बट ऑन द अदर हैंड एटीके मोहन बगान अलवारन के साथ लेफ्ट साइड से एक बेहतरीन रन था, बट आखिर में आके उसका रिजल्ट इनको नहीं मिल पाया. बट बॉल कंट्रोल करने की जरूरत है. बेलिंगम से डायरेक्टली जार्जिनियो एंड उस जगह पे बॉल को पीछे भेजा गया. एंड देखिए कोशिश कर रहे हैं कि खोला जाए एटीके मोहन बगान के डिफेंस को एंड पूरे टीम को थोड़ा सा दूर दूर लेके जाया जाए, क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑपरेट कर रहे हैं. एंड जब गैप्स बनेगा उस टाइम में मौका मिलेगा. वहाँ पे रोनाल्डो, क्या कॉम्बिनेशन था ये. माय गॉड. Oh my goodness. I mean, I did not see that coming. I'll be honest to you. This is exactly what we were talking about, right? Crusher, well, he needed that little thinking moment of what Afnan is trying to do. And when he found that opening, nobody was in front of him, gave that pass and beautiful, just, blazed through the goalpost. And this could be the second one. But no, Van der Sar makes a save for his life. The ball hitting not his gloves but his head, and that's all you need to do. Quite literally putting his body on the line, trying to save that goal, because this could have been disastrous for Afnan had that got in, because we are again witnessing that second half luck going on for Mumbai City FC, where they're looking so lethal. Yes. Like क्या शानदार एक कमबैक था. बाय द वे ये कमबैक जिस तरीके से किया गया है, आई थिंक एटीके मोहन बगान के फैंस एंड अफनान एज वेल वो भी सोच रहे होंगे हाउ एंड व्हाई. जिस तरीके से फिनिशिंग किया गया था, बट इस बार एक बार फिर से मौका. ओह, एंड ये कमबैक नहीं, ये डोमिनेशन है. पहला गोल आउट ऑफ नोवेयर आ गया और सेकंड गोल उन्होंने बिल्ड करके किया. एंड मुझे लगता है कि पहले गोल का ही आफ्टर शॉक था ये, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले गोल के बाद से ही मुझे लग रहा था कि अफनान थोड़े बहुत डाइसी सा चल रहे थे. एंड उसके बीच में मुझे लग रहा है कि शेकी ने सोच लिया या फिर कुछ जो है वो रास्ता निकाल लिया कि फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है. तो फॉर्मेशन चेंज किया गया था. सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड पे खेलते हुए दिख रहे थे पहले. सो या इधर कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. एटीके मोहन बगान को अभी 2 गोल्स करने होंगे अगर उनको ड्रॉ पे खत्म करना है इस मैच को तो. Oh, I mean, this is not looking good, right, for ATKMB, because the momentum has been completely stolen away from them, and this is where Crusher is starting to look really dominating. And look at that, finally retrieving some of that possession. Now he's taking a lot of shots, and now he's converting. Now he's found that chink in the armor of Afnan, and he's gonna keep on hurting him where it hurts over there. And at this point, I really feel like Afnan's defense was all over the place. I mean, the defenders were going for it, they were making those tackles, but the loose ball going out there, again being retrieved by R9, and then, R9 does not miss shots like that. And this was another goal incoming, 100%. And this is where now the tables have turned, right? This is where Afnan needs a mental reset. And we know this player can do that. Needs to be a little bit more calm, needs to hold on to the ball, but he's going for a different approach. Makes a run with his fullback, and it's going to be Theo Hernandez passing it on towards Aluviran with R9. Wanted to take an attempt, and this is so interesting from Crusher actually, going for a lot of cards like Alfonso Davis. This is the Team of the Year honorable mention card, a beautiful card to be honest. Has got 97 pace, and if you apply chemistry, that goes on to 99 for both his sprint speed and acceleration. Has decent dribbling too, has decent defensive stats too. But for now, ATK Mohun
Bagan again pushing in on the wings, passes it on towards R9, wanted to beat the defender, wanted to beat Adam Militao over there, but did not quite succeed. And with I think with Pele, looks for a player lock over there, but I think Pele was not where he was supposed to be, as a result of which the attack has slowed down a bit. Yes. And oh, अभी तक अगर देखा जाए तो देखिए डिफेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने के मौके नहीं है। वो इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मुंबई सिटी एफसी। स्पेशली प्रेशर की अगर बात किया जाए, वो जिस तरीके से इस बार खेल रहे हैं, पिछले 2 मैच हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्लेयर को इतना ज़्यादा यूज़ करते हुए नहीं देखे। शुरुआत में इंडिविजुअल प्लेयर को उतना यूज़ नहीं कर रहे थे, वो पासिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बट इस गेम पे आप देख सकते हो कि एक प्लेयर को लेके बॉल ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं, बहुत टाइम तक बॉल रख रहे हैं ताकि उस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा बहुत मौका मिले, पासिंग ऑप्शन मिले एंड वो भेद के आगे निकल सके। बेहतरीन तरीके से ग्राउंड के साइड को चेंज किया जाएगा। अल्फोंसो डेविस टू पेले, इस बार लूशियो क्रिटिकल एक इंटरसेप्शन करते हुए बॉडी पुश किए थे पेले को एंड उधर से बॉल छीना गया। अगर नहीं छीनते तो ये तीसरा भी हो सकता था, बट ठुली उनके फिजिक के साथ हम जानते हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एंड बॉल छीना जरूर गया था, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं। आखिरी 13 मिनट एंड 13 मिनट पे इधर 2 गोल स्कोर करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। पेले, वारन, थियो हर्नांडेज चढ़ के खेल रहे हैं, लेकिन डिफेंस में ये कमी देखने के लिए मिलेगा। इस बार स्प्रिंट आएगा म्बाप्पे की तरफ से, बीच में रोनाल्डो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लेकिन इतना जल्दी बॉल रिलीज करने की कुछ भी नहीं है एंड उसी के साथ एक कॉर्नर मिल जाएगा। सो जल्दबाजी नहीं है मुंबई सिटी एफसी। क्रशर उनको पता है कि अभी जितना भी टाइम चाहे हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 गोल्स की लीड है। एक गोल इसीलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैच जीत चुके हैं। सो 2 गोल का लीड जब उनके पास है तो इधर से उनको जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। And a quick reminder for all the ATK Mohun Bagan fans that even if Afnan scores one more goal and draws this match, they would still end up losing this matchup, because the co-op match was absolutely dominated and won by the players of Mumbai City FC. So Crusher has that extra added cushion. So ATK Mohun Bagan has to look for not just 1 but 2 goals, and with the possession on Crusher looks very less likely. And at this moment, Crusher will, let's just admit, he was the better player in this game, has now gotten in David Ginola. Another thing I want to point out is with the formation, Afnan has opted for a change in his formation, has gone for the 4-2-4, a new meta formation that a lot of players have been using, pro athletes, and you get that wing option completely being exploited, a lot of passing potential over there. And when you've got 4 players on your attack heading through, this is where you kind of take a gamble and try to score one. But the trade-off is your midfield kind of falls a little short. You have to rely on those longer passes, try and engage your wingers a lot. Davis, this is something again Crusher wants to exploit. Davis to Pele, again back towards Davis. He needs to look for another opening, but if he keeps possession like this, this is pretty much lights out for Afnan. Sure, and आखिरी 2 मिनट एंड इस बार भी एक मौका बन रहा था, बट अल्फोंसो डेविस आने के बाद जिस तरीके से पेस पे बढ़ोतरी हुआ है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, वो बहुत ही अच्छा है। बट शायद आखिरी चांस एंड ये चांस भी उनका काम नहीं आएगा एंड हकीमी इनको पता कि इधर मैच खत्म होने वाला है, सीसीआर से बॉल अपने पास ही रखना सही रहेगा, उन्होंने रखा एंड उसी के साथ हम लोगों को बैक टू बैक 2 मैचेस इधर मुंबई सिटी एफसी जीतते हुए देखने के लिए मिले, बहुत ज़्यादा लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ। बट एटीके मोहन बगान स्टार्ट जिस तरीके से हुआ था 1-1 के साथ देख के बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे थे, लेकिन फिर वो कोऑप गेम से आई डोंट नो लाइक क्या हो गया उनको, एंड उसके बाद क्रशर आखिरी मैच पे आके वो 10 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया वो बहुत ज़्यादा लाजवाब था। एंड यही चीज़ इधर देखने के लिए मिला। देखिए शुरुआती गोल तो काफ़ी अच्छा था अफनान की तरफ से एंड देख के लग रहा था कि वो प्रॉपरली कॉन्फिडेंट है आज के इस गेम पे, बट उसके बाद कुछ चांस बने
जिधर बहुत अच्छे खासे सेव्स आए थे, नहीं तो पहले भी गोल आ सकते थे। बट ये क्या था, लाइक अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या शानदार कॉम्बिनेशन, एम्बापे टू रोनाल्डो, एंड रोनाल्डो जस्ट डी बॉक्स के बाहर से उधर शॉट लिया एंड वो फिनिश किया नेट्स के अंदर, बेहतरीन। Yeah, I think from that is where things got even worse. हम्म, And with R9, you've got such beautiful ball control, and that is where we saw the second goal also coming through. And this is, of course, this was the match number 10. And Mumbai City FC, they've won 2 games of 3 that they played. So a beautiful run that's going along. And ATK Mohun Bagan, after winning that first game against Odisha FC, have finally fallen down to the players of Mumbai City FC. And this is where they also need to go back to the drawing board and figure out how could they make things better, and especially that co-op game could be worked on tremendously. But let's take a look at who the MVP is going to be, and is there any doubt? Has to be Crusher. Scored 2 goals in his individual matchup, and is going to be enough to take home those 3 points coming from this crucial fixture for Mumbai City FC, because they are the finalist club of last season's eISL. You would have bigger expectations. Now, considering you've got 2 completely new players, but two completely experienced players in your roster, I think this sort of this sort of an outcome is something that we would expect more often from this club. या मुंबई सिटी एफसी जो रन इनके तरफ से अभी तक रहा है, ये देख के तो लग रहा है कि यस, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स अभी के लिए इस सीजन के अंदर हम लोगों को नजर आए हैं। एंड उसी के साथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात इसीलिए नहीं कर रहे, उनके पास बेहतरीन प्लेयर्स है इसीलिए भी कि उनका फॉर्म अभी बहुत ज़्यादा लाजवाब लेवल पे चल रहा है। बट ऑन द हैंड एटीके मोहन बगान का शुरुआत हुआ था एक विन के साथ, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो गया क्योंकि 2 मैच के बाद सिर्फ उनके पास अभी 3 ही पॉइंट्स रहेंगे। Yeah, and that does not, digest well for the ATK Mohun Bagan fans. They've got to wait a little longer till they get their next victory. But that being said, ladies and gentlemen, we are finally done with our first match of the evening. We're going to be heading for a short little break, and right back, we will be back with game number 2.